So today Rahul Chandalia will present something that how we all can make our presentations awesome, wonderful. And he is going to take reference from Beyond Classroom Season 3, wherein we have done a lot of workshops for presentation skills, and which was done by 6 speakers. And one of them is a film actor. Another lady again is a master NLP practitioner. So all this put together, and Rahul is going to share with us few things, plus certain other things which he has prepared for all of us to learn, understand, and see that we can make our presentations little more better and little more fruitful and make it just wow. So without wasting much time, over to you, Rahul. Looking forward to learn from you. And here we go. So which ID you will use for your presentation? Yeah, this is perfect. I hope I'm audible. Rahul. I hope I'm audible. Perfect. Thank you. Thank you. Good evening. Good evening. Welcome all to this special session on presentation skills. In this session, I will try to cover, मैं कोशिश करूंगा हमारे Volatility Coach dashboard पे Beyond Classroom series के presentation skills के 6 videos हैं वहाँ पे. That is approximately more than 7 hours of content. मैं आज आपके सामने कोशिश करूंगा उस 7 hours के content का एक रूपांतर आपके सामने पेश करने का. हम में से ज्यादातर लोगों ने उन वीडियोस को शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, but for me that is something from where I began my journey 2 years ago, and from there the Beyond Classroom series season 1 to season 13 have been grossly involving, and I'll also take you through the dashboard, how it looks like, what all we have covered, and where are we heading towards. So let me share my screen, and I hope my screen is visible. Yeah, perfect. So this is acting up. Okay. So before I begin, I'll start the session with the national anthem. So I will request all of you to be a bit serious. I'm going to play the Volatility Coach national anthem for all of you. You don't need to get up on your seat, but if possible, please turn on your videos. Please put on your headphones. It was a primary requirement to attend this session. If you have, please put on your speakers, put on your headphones. Let us have the theme of we see national anthem in us. In the next 10 seconds, I will play the video. So till then, if you have not yet put on your headphones, if you have not yet put on your eyes on me, please let that be. Thank you. Here we go. दिल खोल के आंखें बंद करके सुनिए. Rahul, I think the sound is not there. Sound is not there, Rahul. So you need to add audio to your this. I think while sharing, you need to just add the video, audio. वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने अपने. भारत की चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स यानी आधिपत्य अब एफआईआई यानी फिरंगियों के पास हैं
और भारतीयों की इक्विटी में ना निवेश करने की आदत के कारण वो दिन दूर नहीं जब सारी अच्छी भारतीय कंपनियां फिरंगियों की हो जाएंगी। तो अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले वीसी का सहारा। तमाशा देख लो आप, सारे म्यूचुअल फंड है खास। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले वीसी का सहारा। मेहनत थकन शक्ति कड़ाई, भारतीयों की गाड़ी कमाई। जब हमने ही शक्ति लगाई, फिर फिरंगियों ले जाते मलाई। अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले वीसी का सहारा। निवेशक की समस्या का आभास, ना कोई शोषण सबका विकास। पैसिव इनकम भी है खास, तभी तो वीसी पर विश्वास। जरूरत है सबको वीसी की, जो सोचे निवेशक की। हाथ रहेगा साथ रहेगा, तभी लक्ष्य से जुड़ा रहेगा। A big round of applause to Chaitanya, Alok, Kanak, and all who have been involved into making of this national anthem. जब भी ये सुनते हैं तो रगों में खून और तेजी से दौड़ता है. This is something which brings a lot of enigma into my blood as a volatility coach, as a financial advisor, as a mentor, as a speaker. So let me take you back to today's session on presentation skills. And as all of you know, I have been reading a lot of books, so nothing new, but yes, today's session is again being inspired by one of the episodic books by Seth Godin, Purple Cow. Seth Godin ने इस बुक की इंस्पिरेशन कहाँ से ली, उसके ऊपर मैं आपको 30 seconds की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और फिर आगे बढ़. I hope I am audible to all of you, correct? I am not audible still. Okay. Am I audible now? Perfect. So, जैसा आप सब जानते हो, I am an avid book reader, and most of my presentations, most of my deliveries are being inspired from all of these books which are in physical or in digital format. आज भी presentation skills के ऊपर जो मैं theme लेकर के आ रहा हूँ, that is being inspired by Seth Godin's book Purple Cow. एक बार की बात है, सेठ गोडिन अपने शहर से बाहर कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे और जिस व्हीकल में वो हाईवे से गुजर रहे थे, तो शहर के बाहर जब वो निकले कंट्री साइड पे, दोनों तरफ उन्हें खेत और गाय घोड़े बकरियां दिख रही थी. तो शहर की चकाचौंध से बाहर निकलने के बाद उन्हें ये सीरीन सीन बहुत अच्छा लगा. शहर की चकाचौंध, शहर की भीड़ भाड़, शहर के धुएं से बाहर निकल के एक कंक्रीट जंगल से बाहर निकल के उनको ये खुले खेत और गाय और बकरियां और घोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे. कुछ समय बीता, वापस वही घोड़े वही खेत. कुछ समय और बीता, वापस वही घोड़े वही खेत. ये देख देख के थोड़ी देर में वो उब गए. फिर कुछ देर बाद एक गाय ने उनका अट्रैक्शन लिया, एंड दैट काउ वाज ऑफ पर्पल कलर. वहां से उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि अगर आप भीड़ में लुप्त हो गए, if you get dispersed in the crowd, then you don't make business, then you don't make yourself count. So if you want to transform your business, you have to be remarkable. यहाँ से remarkability का और अपनी एक USP create करने का जज्बा उनके अंदर में आया, and from there this book got transcribed. Many people across world, this has been an international bestsellers, and this is my inspiration for today's workshop on presentation skills. So before I move forward, this is the transformation. This was me 5 years ago, around 2017, 2018. And if you do not believe, this is me today here in front of you.
So that is how you make yourself remarkable. If you have to take that pain, because remarkability starts first from you yourself. If you are going to present something, if you're going to talk something with your client, if you're going to present something in front of your client's family, if you're going to talk about something in front of an audience of 10, 50, 20, 100, 200, 500 people, you are the first one who is going to be present over there. You are the first one who is going to be present over there. And if you are not remarkable in your own style, you get absorbed in the audience. I don't want to get absorbed in the audience. Let me tell you one more very small story. I don't know आप लोगों ने कितने लोग, आप में से कितने लोगों ने कनक को 3 या 4 बार से ज्यादा प्रेजेंटेशन देते हुए देखा है. मैंने कनक जी को 3-4 बार से ज्यादा प्रेजेंटेशन देते हुए देखा. और उन 3-4 बार में से कोइंसिडेंटली आई डोंट नो क्या हुआ, 2 बार जो मैंने प्रेजेंटेशन देखी कनक की, उन दोनों प्रेजेंटेशन में कनक जो प्रेजेंट करने वाले थे वो प्रेजेंटेशन इक्विपमेंट वाज नॉट वर्किंग. हम पूरी मेहनत करके शायद 3-4 दिन लगा करके एक पीपीटी बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसमें अपने थॉट प्रोसेस को डालते हैं. जब आप उस वेन्यू पे पहुंच रहे हो सुबह सुबह 8:30-9 बजे, आपका पीपीटी वहां नहीं चल रहा है. And that was something which inspired me. Kanak was absolutely not perturbed कि उनका पीपीटी नहीं चल रहा है. And he took 2 continuous full day sessions without the help of a PPT. That is something when you carry yourself as an aura, as an enigma, as a positive energy in yourself. You are not bound by the forces of technology to make your presentation count, to make yourself count as remarkable. Thank you. So आज के सेशन में हम 5 स्पेसिफिक सेक्शंस कवर करेंगे. मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर सेशन को हिंदी और जहां जहां फाइनेंस से रिलेटेड हिंदी शब्द मुझे नहीं आते हैं, इंग्लिश में यूज करके इसको कन्वर्ट करके आगे आपके सामने पेश करने की 5 सेक्शंस हम देखेंगे. स्पेसिफिकली अगर आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हो किसी इंडिविजुअल को या किसी एक ग्रुप को, तो उस प्रेजेंटेशन से पहले बिफोर द सेशन व्हाट इज टू बी डन, आपको उस सेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे मैं करता हूं, ऐसा कह सकता हूं कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कैसे मैं मैं उसको शुरू करता हूं. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वोकैबुलरी है, क्या क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेदर वो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, वेदर वो मेरे पॉकेट का पेन हो, वेदर वो मेरी टाई का कलर हो, वेदर वो मेरे शूज का कलर हो, वेदर वो मेरे पास कौन सी बैग है, कैसा डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा अटायर क्या है. That I'll try to discuss with you. How do we have an end impact on that presentation, of that conversation, and after that end of discussion, how do we have a post presentation discussion. इसी के दौरान जो हमारी बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज है, उस बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज में से कुछ वीडियोस के कुछ छोटे छोटे एक्सर्प्स 2-2, 3-3 मिनट के मैंने निकाल करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा. तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया लगेगा कि बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज में जो मैं आपके सामने 2 मिनट का वीडियो प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटे की पूरी सीरीज या क्लास वहां पर है. जैसे जब वो वीडियोस आएंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. कोशिश करूंगा आज का सेशन ऑलरेडी हम लोग 4:20 पे है, 5:10, 5:15 के अंदर खत्म करने की. आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आई विल लाइक all of you to open your microphones now. Put on your videos. Please put on your videos. What is there? अगर आप गंजी बनियान में बैठे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. There is no harm in that. Please put on your videos. It is irritating to see people keeping their videos off. I don't know what are you ashamed of. You are financial advisors. If you're not aware, if you're not confident enough to put on your videos in front of your fraternity, in front of your colleagues, I'm very sorry. You're not doing justice to yourself. आप ट्रैफिक लाइट पे 1 मिनट खड़े ही नहीं हो सकते. आप यहाँ पे 1 घंटे बैठने आए हो, यहाँ पे अपनी खिड़की बंद करके किसी और को देखने के लिए. क्यों आप अपने आप को अनजस्टिफाई कर रहे हो, क्यों आप मुझे अनजस्टिफाई. प्लीज बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. सो व्हाई इज प्रेजेंटेशन स्किल नेसेसरी फॉर अस एज अ फाइनेंशियल. हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स को, बॉन्ड्स को, एफडीज को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करना. हमारा काम है एसेट एलोकेशन एनालाइज करना. हमारा काम है अपने क्लाइंट्स की गोल प्लानिंग करना. हमारा क्लाइंट्स की नेटवर्थ को समझ के उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑप्ट करवाना. हमारा काम है क्लाइंट के सेंटिमेंट्स को मैनेज करना.
हमारा काम है क्लाइंट को टाइम टू टाइम ये बताते रहना कि सर मार्केट का क्या रुख है, क्या लग रहा है हमें। तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स की क्या आवश्यकता है? Why the hell do we, as a bunch of qualified, knowledgeable people, as a bunch of a few 100,000 people serving an economy of 130 crore plus people, why do we need presentation skills? क्या जरूरत है हमें प्रेजेंटेशन? आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी में करीब करीब 40 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक इनकम कमाते हैं या इनकम जनरेट करते हैं या उस जनरेट करने की कैपेसिटी में है। उन लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत है। उन 60 से 70 करोड़ लोगों को सर्विस करने के लिए नंबर ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स शायद कुछ हजार है, और टोटल नंबर ऑफ एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को मिला लें तो शायद कुछ लाख लोग हैं। उन कुछ लाख लोगों में से 130 करोड़ की आबादी में शायद कुछ हजार लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेटर्निटी या इस तरीके की संस्थाओं से खुद को अपग्रेड करने के लिए जुड़े हुए हैं। क्या हमें जरूरत है प्रेजेंटेशन स्किल की? कैन समबडी प्लीज ओपन अप हिज माइक एंड से this is the purpose of this session, presentation skill. Why do we need presentation skills? Is it necessary? Rahul ji. Who is that? I can't see you. प्रेजेंटेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर। बिना प्रेजेंटेशन के आप अपने आप को कैसे दिखाएंगे लोगों के सामने? आपको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो अभी प्रोडक्ट सेल होगा। प्रेजेंटेशन तो सबसे मेन पार्ट है हमारे बिजनेस। हम लोग उसी में पीछे हैं, क्योंकि पहले तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। पहले हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। पहले मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मुझे अपने आप को क्यों प्रेजेंट करना है? ऐसी कौन सी चैलेंज है मेरे सामने कि मैं अगर अपने घर के ऑफिस से आपके सामने आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो भी मैं जूते मोजे टाई कोट पहन के दे रहा हूं? क्या क्या ऐसी जरूरत है? What is the need for me today to present to my own fraternity in this attire? What brings me over here to do that? To create strong customers. First impression is always last impression, so you have to be very presentable. Always the last impression. Thank you very much, Swati ma'am. I would like to have a virtual round of applause for Swati ma'am. मैं अपने क्लाइंट के सामने अकेला नहीं जा रहा हूं। मेरे उसी क्लाइंट के सामने मेरे से पहले उसका बैंक ऑफिसर खड़ा है, और उसका बैंकर उसके पास कभी अकेला नहीं जाता। जिस दिन आपके क्लाइंट के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होता है, उस दिन उसके बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने 2 कलीग्स को लेकर के टाई कोट पहन के एक गाड़ी में उसके घर जाता है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो सर? आपको लगता है कि आप हाफ शर्ट पहन के अपने क्लाइंट के पास चले जाओगे तो वो आपसे प्रोफेशनली बिहेव करेगा? क्या आप प्रोफेशनली बिहेव करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो? Are you justifying this to yourself? Answer yourself, don't answer me. अगर मैं अपने क्लाइंट से एक फोन भी करता हूं तो उसके पहले मैं अपना CRM सॉफ्टवेयर खोल के देख रहा हूं कि मेरी टीम ने उससे क्या क्या बात किया है, वो क्लाइंट कब आया था, उसके पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है, उसकी लास्ट क्वार्टरली पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग मैंने कब की थी, उसका पिछले साल कितना कैपिटल गेन बुक कराया है मैंने, इस साल की उसकी 1 लाख की लिमिट में से कितना कैपिटल गेन बुक हो चुका है, कितना बाकी है, उसका कितना पैसा मेरे पास है, उसका कितना पैसा किसी और के पास है। ये सब जानकारी लेकर के फिर मैं क्लाइंट को फोन करता हूं। मेरी टीम 3 दिन से मेरे पीछे पड़ी है, सर अश्विनी जी को फोन कर लीजिए। मैं नहीं फोन कर रहा हूं अश्विनी जी को। आज सुबह फिर उसने फोन किया मुझे, तो सर अश्विनी सर को आप फोन कर लीजिए। मतलब मैं क्या करूं? मैं अश्विनी जी को फोन करके क्या बात करूं? क्या मेरे पास उनका ये फिगर है, ये सारा डेटा है? आज तक मैंने जब भी अश्विनी से बात की है, वो बात मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन है। जब मैं उससे फोन पे बात कर रहा हूं तो मैं अपने क्लाइंट को रियलाइज कराता हूं कि हम इस दिन यहाँ पर इस समय आपके घर पे ये बादाम के टकोरे के साथ मिले थे।
जब मैं उस क्लाइंट से मिलता हूं तो मैं उसको बताता हूँ इस दिन आपके ऑफिस में 12 खंबा रोड पे 3rd फ्लोर पे जब मैं गया था तो आपकी खिड़की के बाहर एक बंदर बैठा था। मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं उसको बातों में भी एक पिक्चर दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। दैट पिक्चर विच ही विल रिमेंबर, with that picture he will not only remember that picture, he will remember me sitting in front of him. That is how I am presenting myself. उसके बाद मैं कन्वर्सेशन शुरू कर रहा हूं। मैंने उससे बात करने से पहले कम से कम 1-1.25 घंटा उसके पोर्टफोलियो को देखने में लगाया है। अब वो पता नहीं मेरे से क्या सवाल करेगा, लेकिन मैंने अपना पसीना बहाया है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि चाहे वो जो भी सवाल करे उसका जवाब मेरे पास होगा। आज के प्रेजेंटेशन के लिए 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ खास प्रिपरेशन करने की, लेकिन मैं 26 तारीख को दिल्ली आया, 26 से आज तक इसी प्रेजेंटेशन पे लगा हुआ हूँ। 4 बार सेल्फ मॉक रिहर्सल किया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास कुछ सवाल होगा, लेकिन अगर आपके पास सवाल है तो मेरे पास उसका जवाब होगा। 26-27 से ज्यादा शहरों में 60 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुके हैं। हर वर्कशॉप में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, बट क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? So this presentation skill is what prepares us. अभी मैं कुछ दिन पहले सूरत गया था, वहां पे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे से पूछा कि राहुल यार हम एक एडवाइजर हैं, ज्यादातर हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर फेटर्निटी वाले 1 मैन आर्मी होते हैं, 100, 200, 300, 500, 600, कुछ लोग 700 करोड़ रुपए भी सिंगल मैन आर्मी पे मैनेज कर रहे हैं। एक सिंगल मैन आर्मी एक साल में 365 क्लाइंट ही मैनेज कर सकता है, एक दिन में 1 क्लाइंट या ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइंट। तो कैसे हम अपने क्लाइंट बेस बढ़ाएं? बोला आप 1 to 1 की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, मैं 1 to many की बात कर रहा हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन करता हूँ क्वार्टर में और उस प्रेजेंटेशन में अपने सारे क्लाइंट्स को बुलाता हूँ। जो मैं एक क्लाइंट से 1 to 1 3 घंटे लगातार बात नहीं कर सकता हूँ, उस प्रेजेंटेशन में 3 घंटे में लगातार उससे वही बात कर रहा हूँ, और एक साथ एक से नहीं 60, 70, 100 लोगों से। दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन स्किल इन टुडेज जनरेशन इज गिविंग मी। अगर मुझे अपना बिजनेस यहाँ से 10x, 20x, 100x करना है तो मैं 1 to 1 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज द इंडस्ट्री इज एक्चुअली एक्सप्लोडिंग। जब मैंने शुरू किया था आज से 11 साल पहले, तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ पे थी। आज ये इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ रुपए पे है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि आने वाले 4 साल में ये इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ को टच करेगी। जितना हमारा आज के AUM है उसका कम से कम 1/4 हम लोग हर साल ऐड करेंगे। SIP की ग्रोथ रेट 18% CAGR से ज्यादा है। कैसे हैंडल करेंगे हम 130 करोड़ क्लाइंट्स को? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजिंग 130 करोड़ पीपल? They all will need financial advisors. So this is why presentation skill is actually necessary. Let me take you forward with this now. एक ऐसी कमोडिटी बताइए जो हर इंसान को एक मिनिमम मात्रा में ही चाहिए। अमीर को, गरीब को, राजा को, रंग को, धोबी को, बिजनेसमैन को, सबको एक ऐसी कमोडिटी जो एक लिमिटेड क्वांटम में ही चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज जिसका कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। सॉल्ट, करेक्ट। कनक, रोहित, एवरीबॉडी सेइंग सॉल्ट। तो क्या नमक का बिजनेस किया जा सकता है? नमक हो टाटा का टाटा नमक, हम सब सुन रहे हैं बचपन से। हमें हर एक इंसान को एक दिन में शायद 1 चुटकी नमक चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। 20 या 22 या 25 रुपए किलो का नमक बिक रहा है। क्या नमक का बिजनेस करना मुनासिब है? क्या नमक के बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया जा सकता है? क्या है ऐसा कोई एग्जांपल? DS आपके सामने आ गया। 25 रुपए का नमक प्यूरो हेल्दी सॉल्ट के नाम से 125 रुपए किलो बिकता है और लोग खरीदते हैं। 25 रुपए किलो का नमक 125 रुपए किलो में बिक रहा है आपके घर के बगल वाली ग्रोसरी स्टोर में, और लोग खरीद रहे हैं। That is the USP it has created.
ये वो कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो हम शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। धारा का वो एडवर्टीजमेंट जहां एक छोटा सा बच्चा रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे बैठा है और दादाजी उसके पास आके कहते हैं जलेबियां बनी हैं, और उस बच्चे के एक्सप्रेशन देख करके सेंटर शॉक का वो एडवर्टीजमेंट, शॉक लगा। ये अपने आप में ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जिनको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वन ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस इनटू दिस सेगमेंट लेंस कार्ट। आप और मेरे सबके घर के सामने एक चश्मे की दुकान है, बट स्टिल टुडे लेंस कार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट लीडर इन द लास्ट 7 to 8 years इन द इंडियन आईवियर इंडस्ट्री। कैसे? ऐसा क्या चेंज किया लेंस कार्ट ने? लेंस कार्ट ने आपके चश्मे पहनने को एक शॉपिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया है। एक ही स्टोर पे आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स, आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आपके घर के पास वाली जो स्टोर थी ना जिसमें आप जाते थे चश्मे खरीदने के लिए, उसमें बच्चों के लिए सिर्फ 3 ही वैरायटी के चश्मे थे, लेकिन लेंस कार्ट पे बच्चों के लिए एक पूरा रैक बनाया। उसी लेंस कार्ट में आपको अगर स्पोर्ट्स वियर स्टाइल में एक आई ग्लास चाहिए, आपको ऑप्शन अवेलेबल है। कन्वीनियंस, स्टाइल, अफोर्डेबिलिटी, ट्राई एंड बाई, डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस, सबसे ऊपर लेंस कार्ट का डब्बा आप सबके पास होगा जो लोगों ने लेंस कार्ट से कभी लिया है। रिच लुकिंग वेलवेट फिनिश बॉक्स में आ रहा आपका चश्मा। That is where you create an experience. What is my USP? What is your USP as a financial advisor? कहने के लिए हम 60-70 करोड़ को कैटर करने के लिए सिर्फ एक कुछ लाख एडवाइजर्स हैं, लेकिन कुछ लाख भी आपस में लड़ रहे हैं। What is the USP? We have been continuously talking within our group. You have to make a USP. हम में से कुछ लोग सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग का काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ एनआरआई इन्वेस्टर्स के पास काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज देयर यूएसपी। This is the lens USP of Lenskart. What USP have we created for ourselves within the eyes of our client? और वो USP कैसे क्रिएट होगी? मेरा क्लाइंट मेरे से आके नहीं पूछेगा राहुल तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, मेरा क्लाइंट मेरे से आके नहीं पूछेगा राहुल तुम कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन देते हो। मैं व्हाट्सएप पे हर दिन जो स्टेटस लगा रहा हूं वो आप लोगों के लिए नहीं लगाता हूं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो पोस्ट डाल रहा हूं वो आप लोगों के लिए नहीं डाल रहा। दैट इज ब्रिंगिंग मी बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं भी आ रहा है तो जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसकी नजरों में जो मैं 2015 में था और आज 2023 में मैं यहां पर हूं, वो मेरे साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है। क्या आपका क्लाइंट आपके साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखना चाहता है? और अगर रखना चाहता है तो क्या वो आपको एसोसिएटेड रखना चाहता है जस्ट बिकॉज कि आप उसके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो या कुछ और? मेरी पहली कंडीशन होती है कि जब आपकी पोर्टफोलियो की पहली मीटिंग होगी उस मीटिंग में आप अपनी स्पाउस के साथ प्रेजेंट होंगे। गए दिन का एक केस मैं आपको बताता हूं। एक क्लाइंट हमारे साथ मिले थे, वो और उनकी वाइफ दोनों थी साथ में। उनकी बिटिया लगभग मेरी बिटिया के बराबर ही है, 8-9 साल की है। और वहां पे हमने एक डिस्कशन शुरू किया गोल प्लानिंग का। उनके पास 3 प्रॉपर्टियां थी, लेकिन उनके पास ये प्लान नहीं था कि बिटिया अभी जो 10 साल की है उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर भेजना है तो उस समय 80 लाख रुपए कहां से आएंगे। मैंने कहा आपने ये 3 प्रॉपर्टियां अपनी खुदगर्जी और अपने सेल्फिशनेस के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट के लिए इकट्ठी की हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि आप इन प्रॉपर्टीज को बेच करके अपनी बिटिया को फॉरेन एजुकेशन भेज सको। और जिस दिन आपकी बिटिया को फॉरेन एजुकेशन भेजने की बात आएगी आप तो कह दोगे कि सर हिला करके बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। दिस इज योर सेल्फिशनेस। आंखों में आंखें डालकर उनकी वाइफ के सामने ये बात की है। 3 दिन बाद उनका फोन आया, राहुल आई वांट टू सेल द प्रॉपर्टी। और अगर उस डिस्कशन में उनकी वाइफ इंक्लूडेड वहां पे नहीं होती तो वो क्लाइंट ये डिसीजन कभी नहीं ले पाता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड टू प्रेजेंट बिफोर योर क्लाइंट्स फैमिलीज instead of talking only to the client? We all know, हम सब जानते हैं कि men are not
द बेस्ट डिसीजन मेकर्स, बट हम फिर भी मेंस के ही पीछे पड़े हैं. You are trying to, we all are trying to deal emotionally with our clients, but we are not involving the better half of our clients. I don't know, maybe people are involving. I'm just being satirical to take the things out of your heart now. That is the requirement of a presentation. मैं अगर प्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या मैं सही आदमी को प्रेजेंट कर रहा हूं? अगर मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं, 40 से 50 मिनट की मेरी मीटिंग होगी, इसका क्या प्रोपोर्शनेट है कि 40 मिनट में मैंने जो जो बातें मेरे क्लाइंट को कही है वो उसको याद रखेगा, और 40 मिनट का जो डिस्कशन मैं अपने क्लाइंट और उसकी वाइफ और उसके बच्चों के तीनों के सामने कर रहा हूं, एटलीस्ट इतना मैं जरूर श्योर हूं कि 20% तीनों जरूर याद रखेंगे. And I have increased my propensity to do business. Let's move forward with this. We are into a specific separate class. ना तो हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ना हम टीवी कॉमर्शियल्स दे सकते हैं, ना हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं. मतलब कहने के लिए हम लगा सकते हैं, बट क्या न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स और कॉमर्शियल से हमारे पास कभी बिजनेस आएगा? सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बोलते हैं कि हमारे पास बिजनेस आता है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया से कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स कैसे चूज कर सकता है. मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट डालता हूं, बट वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए डालता हूं. Swati ma'am is saying it's compulsory to get spouse in my office. That's one of the best practices. Kanak sir, we should get a best practices emblem where spouse should be involved into financial decision making. It increases the chance of getting the share of wallet. जैसा मट्टू भाई कहते हैं, श्रीकांत मट्टू भाई कहते हैं, how to increase the wallet share, involve the spouse. Thank you, Swati ma'am. Thumbs up to you. Sure, I just broke my chain of thoughts. हाँ, I was into advertisement. We as financial advisors, क्या हमें लगता है कि हम न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स लगा करके, गाड़ी के पीछे, ऑटो के पीछे ऐड लगा करके नया बिजनेस ला सकते हैं? मुझे लगता है नहीं ला सकते हैं. तो मैं कैसे नया बिजनेस ला सकता हूं? प्रेजेंटेशन करके, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके, जो मेरा क्लाइंट जिसके पास मैं मिलने जा रहा हूं उसकी सोसाइटी में एक वर्कशॉप करके. इसके ऊपर मैं एक छोटा सा ग्लिम्स आपके साथ शेयर करता हूं. बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज से एक ग्लिम्स लिया है मैंने, आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे अभी. I think the audio should be audible now. I'll just play this. समीरा खलीली का एक ये क्लास ही अराउंड 1 आवर 10-15 मिनट्स की क्लास है. उस क्लास में से मैंने कुछ 2 मिनट का एक शॉर्ट एक्सर्प्ट इसमें से निकालना है. ध्यान से सुनिएगा. अगर आप अभी तक कहीं और देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा. ये बहुत छोटा सा क्लिप मैंने उसमें से निकाला है. प्रेजेंटेशन में और पर्सनल ब्रांड क्रिएशन में क्या जरूरी है, शी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. Okay, which is why we always have to be careful about how we are presenting ourselves at all times. Okay, so I want to very quickly talk about something very basic, which is brand versus commodity. So if you see, Starbucks is a brand, and generic coffee, you know, which you get at the chai wala ka dukan, you know, or you get a cutting chai, or he gives you a special coffee, right? It's a simple filter coffee if you get when you go to Shiv Sagar, or if you go to any kind of regular coffee shop, which is a no-name coffee shop. So you can get a cup of coffee, or you can get a Starbucks coffee. Now, what is the difference over here? Say, for example, a Starbucks coffee stands for certain quality, certain service promise. If you go into Starbucks, you know there'll be music, the AC will be always running. The person who's over there will always say, "Hi, welcome to Starbucks." Okay, so that is what you call a brand experience, right? So the difference between a commodity and a brand is that a brand has a certain value and a certain promise, right? So similarly, I want you all to think about yourselves. If you are a brand, if you are brand Tejas, or if you are brand Pramod, all right, what is it about you that makes you different from everyone else? Okay? So
Okay, which is why we always have to be careful about how we are presenting ourselves at all times. The AC will. Okay. So, why do we need personal branding? Very simply, here we are. Zig Ziglar, who's a great sales trainer, actually says this. So it's all about trust. You're absolutely right. If people trust you, they'll do business. That, my dear friend, is the fundamental of doing presentation. अगर मैं एक प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं हाफ शर्ट में, बिना आयरन की हुई ट्राउजर्स में, मैं भीड़ में लुप्त हो जाऊंगा. So the first purpose of my presentation is that people like me. People should like me. And the second principle of a presentation is that they should trust you. आपने AMC's की presentations देखी हैं? एकदम polished, suited, booted, tie, coat. But what is one element that is missing into the presentation of an asset management company? पूरा 2 घंटा लगाते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को ब्रीफ करने में, पूरे 2 घंटे. और उस प्रेजेंटेशन से पहले उसका HR पता नहीं कितनी मशक्कत कर रहा है कंपनी के HR से बात करके उस प्रेजेंटेशन को लाइन अप करने के लिए. HR मेहनत कर रहा है उस प्रेजेंटेशन में बंदों को इकट्ठा करने के लिए. प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है, 15 मिनट तक लोग आते नहीं है अपनी कुर्सियां छोड़ करके. इतनी मेहनत करके, इतने लोगों के मैन आवर्स को डिवोट करके आपने वहां पे मुश्किल से 35 लोगों को जमा किया. 35 लोगों को जमा करके आप 2 घंटे वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो. 35 people into 2 hours per person is equal to 70 man hours. 70 मैन आवर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिले हैं प्रोमोट करने के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए. 70 मैन आवर्स के बाद में लास्ट में जो 1 मिनट बचता है, उस लास्ट के 1 मिनट में वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है वहां पे. ये हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ले लीजिए. आपने पूरे 70 मैन आवर्स खत्म कर दिए वहां. The trust factor which you were trying to build in this has been completely evaporated by your one inclination to sell your product. क्या आज तक किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वो प्रोडक्ट जो वो आईपी में प्रमोट करता है बिका है? अगर आप में से किसी ने आईपी की है तो क्या आईपी करने के बाद इमीडिएटली क्या आपने कोई एसआईपी की है? आपने उस आईपी में जो प्रोडक्ट को प्रमोट किया उसके बारे में? नो. योर प्रेजेंटेशन इज अबाउट ऑफरिंग अ सॉल्यूशन. वो टाइम चला गया. आज से 12-15 साल पहले जब मैं एमबीए कर रहा था तब मार्केटिंग की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है. इंस्टीट्यूट्स में आज भी फिलिप कॉटलर से ही पढ़ाते हैं, लेकिन टाइम्स हैव चेंज. अब सेल्स इज नो मोर सेल्स. डायरेक्ट सेलिंग नेवर वर्क्स. If you are putting in your time and the time of your clients into a presentation, do not promote a product, promote a solution. Solution के ऊपर में मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा. When you are talking of solutions, डॉक्टर संजय अग्रवाल का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मेरे पास में. I will try to put it into your thought processes कि what exactly is, किस वेवलेंथ पे हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो वेवलेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, so that what you are offering is being observed as a solution and not as a sales. Let me take you to that video. That's a little lengthy video, 10 minutes, but I think that will be worthy at this point now. Even if we skip some part of this presentation, I believe that is okay. So I'll tell you, this video is about talking at the same wavelength. This is part of a neuro-linguistic programming technique. Kanak is a very avid follower. His wife Shushma is also a coach into NLP technique. इस presentation से मैंने कुछ निकाला है. पर जब हम client से बात कर रहे हैं तो NLP और solution oriented thought process कहाँ use होती है? I have to cover one very important point. One blind spot is we think that, unconsciously think that other person's map of the world is same as of ours. In reality, each person has his own map of the world and his own circumstances, own perspective, own opinion, own judgment, own bias, own assumptions, own presumptions. Everything is his own. He has his own map of the world.
and it is bound to be different. It can't be same as of ours. Second, we remember what other person has said. Actually, we remember our internal representation of what other person has said. Remember, कोई बात याद करिए, कोई बात आपको किसी की खराब लगी हो 2 साल पहले या 3 साल पहले, आज आपको वो बात याद करके परेशान करती है या उससे रिलेटेड जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो परेशान करता है आपको. उस वक्त आपका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन था वो आज आपको तकलीफ देता है और हम उससे चिपके रहना चाहते हैं, हम उसे कुरेदना चाहते हैं कि इस जख्म को मैं हरा रखूंगा. एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, the other person is receiving the same meaning what we are attaching to the words. No, in reality, he receives only the words. I am talking to you. You are receiving only the words. And you are attaching meanings to those words according to your own internal representation system. Now it is my skill how I leave lesser fill in the blanks for you. If we want to have influencing communications, we have to develop this skill. If we leave less fill in the blanks, it is possible that other person receives the same meaning which we want him to take. Otherwise, he will make his own fill in the blanks according to his own internal representation system. Agreed or not? Neurological levels of communication and change. This model has been developed mainly by Robert Dilts. Robert Dilts is one of the senior most NLP trainers of the world. He says that people think or behave in 6 different levels, mainly 5 and 6 is extension of that. One is environment. This is my environment. I am operating in this environment. This is happening in the environment. Right? Behavior. This is the behavior of my colleagues or my suppliers or my clients or my spouse or my children or parents or whatever. Capability space. Capability space, this is my capability. I can do this. I can't do this. Like this, like this, like this. Fourth is in the space of beliefs and values. These are my beliefs, these are my values. Fifth is identity. What is your identity? And sixth is, top level is purpose. What is the purpose? And he says that if you change something on an upper level, this would necessarily radiate downwards, precipitating change on the lower levels. So these are the 6 levels, and I will tell you a very small story how an financial advisor used this model unknowingly about 15 years back with me, because whenever I learn some new things, I back test it on my real life situations. So this was a real life situation. Around 15 years back, sorry. Just a second. Around 15 years back, there was a financial advisor. He came to my office and he told me about a term plan. And around 15, 17 years back. So at that time, I was not knowing about term plan, what term plan is. So he elaborated. He told me that these are the features. So okay. So I asked him what will be the premium for at my age for 25 lakhs sum assured. So he calculated and he said it is 11,800 per annum at that time. That is wonderful. 11,800, matlab 1,000 per month. Fine. 25 lakhs was a big amount that time, 15, 17 years back.
Even today, it is good amount. So at that time, I thought, yes, 1,000 per month, this is fine. So I told him, come tomorrow and take the check. As soon as he got out from my room, I visited Google Baba and checked what is the premium of other companies for 25 lakhs of sum assured. And I found that some companies were charging 10,500, 10,200, 10,800, 11,200, and no company was charging 11,800 or more. And I was shocked, surprised, and I was furious at him. Next day he came and he said, भैया चेक ले, नमस्ते भैया चेक ले आए? चेक? तुम्हारी कंपनी तो लूट रही है. Your company is looting us. Your company is charging the maximum premium 11,800. Others are charging 10,500, 10,800. In term plan, there is no difference. If I die, I get the money. If I don't die, I don't get the money. So there is no difference. So why should I pay a higher amount? So I am asking you a question. Please type in the chat box. When I said this, out of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, in which space I was talking? 1 is purpose and 6 is environment. I have given number 1, 2, 3, 4, 5, 6. When I said that your company is looting, others are charging lower, your company is charging highest, why should I pay this amount? So in what space I was speaking to him? Five, six, 5, wonderful. Yes, this is actually 6 and 5. 6 is because I was saying that in the environment in which your company is operating, other companies are also operating, they are charging less, your company is charging higher in the same environment. And to be honest with you, right now I am looking goody, but at that time my behavior was not that much good. Right? I was furious at him, at least by heart. Okay. He said, okay, yes, dear, I agree. I agree that our company is charging maximum amount, maximum premium. But here I want to ask you a question. Can I? Obviously, I will say yes. And again, it is a principle of influence in communications. Ask permission. Can I ask a question? Other person will be compelled to say yes. There is no choice. In fact, if you say that, can I ask a question? Other person will say, yes, okay. I said, yes, okay, ask. He said, Bhaiya, what is the purpose? Why you are taking this policy? In what space his question was? Can you please type? 1, wonderful, Deepti. 1 is the right answer. Purpose. I am in level 5 or 6 and he asked a question in level 1. I said, भगवान ना करे मुझे कोई बात हो जाए तो मेरे पत्नी बच्चों को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे. इमोशनल लॉस की तो कोई भरपाई नहीं है, कम से कम फाइनेंशियल लॉस की तो भरपाई हो जाएगी. 25 लाख मिल जाएंगे. So in what space my reply was? Three, wonderful, beliefs and values. Yes, great. Yes, perfect. You people are already mastering this. Surprising. And then he asked, भैया भगवान ना करे आपके साथ कोई बात हो जाए, क्या आप चाहेंगे कि भाभी बच्चे इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटते रहें? Now, in what space his question was? No,
in fact, his question was still in the space of purpose, because he was linking my thought process to my purpose. He was guiding the conversation towards a desired outcome by using my purpose as a key driver. Thank you. So this is something which is actually a mental model. If you want to learn more about mental models, please visit your Beyond Classroom section on the FFF page. And in the Beyond Classroom, there are 13 sets of Beyond Classroom series where you will, every video is of a length of between 60 minutes to 1 hour 15, 1 hour 20 minutes. हर एक घंटे के वीडियो में आपको 1, 2 या 3 मेंटल मॉडल्स मिलेंगे. ये मेंटल मॉडल्स हमारे क्लाइंट्स के साथ प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशंस का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज करने में हमें हेल्प करते हैं. एंड इसमें एनएलपी इज वन वेरी यूनिक टेक्निक. एनएलपी टेक्निक में ये भी बताया जाता है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे बात करते करते अपनी आंखों से दाईं तरफ ऊपर की ओर देख रहा है या बाईं तरफ नीचे की ओर देख रहा है तो उसका क्या मतलब है. और कनक स्माइलिंग ऑन दिस. एंड आप उसका कैसे रेसिप्रोकेट आंसर कर सकते हो. योर प्रेजेंटेशन देन इक्विप्स यू, इट गिव्स यू अ बैकडोर एंट्री. ये टेक्निक आपको अपने क्लाइंट के मस्तिष्क के अंदर एक बैकडोर एंट्री दे रही है कि वो क्या सोच रहा है. बट आर यू रेडी? क्या आप प्रिपेयर्ड हो उस टेक्निक को लर्न करने में अपना टाइम निवेश करने के लिए? अगर हाँ तो जाइए बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज में, वहां पे है. वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर एक्सप्लेन्ड है. नॉट अगर आपको एनएलपी एक्सपर्ट बनना है, प्रोबेबली दैट इज नॉट देयर, बट दिस इज देयर. In this video, you will get the basic elements, how you use these techniques to get a better communication from your client. Now, let me get back to you on where I was. So, in case of a presentation, what are we doing? So, before the presentation, whether you are going to present to an individual, to a family, or to a group of people in the form of a seminar or something, before the presentation, you have to prepare your script. आपका प्रेजेंटेशन आपकी मूवी है, आपकी फीचर फिल्म है, आपका शो है. उस शो के लिए आप खुद प्रिपेयर होइए और अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए. अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक पीपीटी उठा ली या प्रेजेंटेशन कहीं से उठा लिया तो वो नहीं. उस प्रेजेंटेशन में जैसा अभी डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे कि हम आपस में वर्ड्स के थ्रू 20% कम्युनिकेट करते हैं. ओनली 20% कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू वर्ड्स. जो वर्ड्स मैं कह रहा हूं, आप उन वर्ड्स को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो. So rest of the 80% is your voice, is your tone, is your expression, is the environment where you are talking. So you have to prepare. आपको एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग, एक कम्युनिकेशन, एक फोन कॉल से भी पहले एक मॉक वर्चुअल कॉल उस क्लाइंट के साथ करनी पड़ेगी. और मेरे जो पुराने गुरु थे, जिनके पास मैंने लगभग 4.5-5 साल काम किया, उन्होंने मेरे को एक सूत्र दिया था. उन्होंने कहा कि किसी को भी कॉल करने से पहले या किसी को भी कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट करने से पहले तुम कम से कम 5 बार खुद से वाई पूछ लेना. 5 वाइज. आस्क 5 वाइज टू योरसेल्फ. आपके क्लाइंट के पास जब आप 5 क्यों का जवाब तैयार करके लेके जाओगे, ज्यादातर क्लाइंट 1, 2 या 3 वाई के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं. चौथा और 5वां वाई किसी के पास से नहीं आएगा, बट आप प्रिपेयर्ड हो. द चांसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग trust in that meeting, in that communication, in that presentation increases significantly. But what happens, वो तब होगा जब आप एक मॉक इंटरव्यू, एक मॉक प्रेजेंटेशन खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तब प्रेजेंटेशन में आप क्या अटायर पहन के जा रहे हो. प्रेजेंटेशन के पहले क्या आपने रिसर्च किया है कि आपके क्लाइंट की नेटवर्थ क्या है, कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनकी एज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनमें क्या होमोजेनिटी है, क्या वो हेट्रोजीनियस हैं, अलग अलग एज के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हैं, उन लोगों के बीच में क्या एक कॉमन स्प्रेड है.
अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन देने जाता हूं तो मैं पहले पता करता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर क्या है, वो कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, और मैं कोशिश करता हूं अपने ज्यादातर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल, गोल प्लानिंग का एग्जाम्पल, मार्केट का एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल उस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन के इर्द गिर्द तैयार करूं। अगर मैं एक गैस कंपनी में जा रहा हूं तो गैस पाइपलाइन को उत्पाद करने में कितना खर्चा लगता है, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। तो मुझे क्या करना है, मार्केट को ट्रैक करने की जगह पे मुझे एवरेजिंग करनी है। तो मैं अपने एग्जांपल्स उस तरीके से क्या करता हूं, आप अपने क्लाइंट की साइकी के अंदर पहले घुसिए, वो किस फील्ड में है, किस जॉब में है, उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए अपने। एंड सेटिंग्स वन ऑफ सेटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है हम में से ज्यादातर लोग अगर कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन से पहले हम अपना लैपटॉप भी खुद ही वहां पे सेटिंग कर रहे हैं, पीपीटी को खुद सेटअप कर रहे हैं, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो उसके डेस्क पे लैपटॉप भी खुद ही सेटअप कर रहे हैं। नहीं, एक कलीग अफोर्ड कर सकते हो आप एक कॉलेज ग्रेजुएट अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज ग्रेजुएट एक दिन में 2 घंटे के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। क्या आपने खोजने की कोशिश की है कभी? खोजी। मैं जब यहाँ से बनारस गया था, मैं जब यहाँ से विजयपुर गया था, जब मैं यहाँ से पाटा गया था, जब मैं हजीरा गया था, तो मैं अपने साथ वहां के लोकल कॉलेजेस के 2-2 3-3 बंदों को अपने साथ लेके गया था। जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो प्रेजेंटेशन देने से पहले मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं सब सेटअप करने में। मैं प्रेजेंटेशन से पहले ये एक ट्राइपॉड, ये एक माइक्रोफोन, ये मेरा फोन का कैमरा, इसके साथ एक डिजिटल कैमरा, ये सब कुछ वहां सेट करता हूँ। अगर उस प्रेजेंटेशन से पहले मैं खुद ही ये सब कुछ सेटअप कर रहा हूं, अगर प्रेजेंट करने से पहले मैं खुद ही ये पूरे सेटअप कर रहा हूं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में 99% जो ऑडियंस है वहीं लूज कर दी। बिकॉज मेरी प्रेजेंटेशन जब घंटी बजेगी तब शुरू नहीं होती है, जब वो प्रेजेंटेशन हॉल में मैं घुस गया तब से मेरी प्रेजेंटेशन चालू है। ऑल आइज आर ऑन मी। मैं कैसे बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, एवरीथिंग इज ऑन दैट। So even settings of the presentation should not be done by presentation के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोग कॉल खुद ही कर रहे हैं क्लाइंट को। नहीं, आप एक टेलीकॉलर अफोर्ड कर सकते हो। If you want to grow your business 10x, you will have, this is an investment in your business। और टेलीकॉलर के थ्रू फोन करें, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट क्यों ना हो। मेरे ज्यादातर क्लाइंट सिविल सर्विसेज कैडर के हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई आईएएस है, कोई आईएफएस ऑफिसर, बट उनको भी कॉल मैं ऑफिस के थ्रू करवा। फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन मेरे पास मैंने अपना जॉब छोड़ करके ये काम शुरू किया था, फ्रॉम द फर्स्ट डे दिस हैज बीन द पॉलिसी। आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने एक और क्रिएट किया, आप अरमानी का सूट पहन करके वहां पे प्लस एनवायरनमेंट में आपने एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद में अगले प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हुआ, आप विजिटिंग कार्ड लेकर के क्लाइंट के पीछे दौड़ रहे हो, सर मेरा विजिटिंग कार्ड। आपका ऑरा खत्म। आपने उस प्रेजेंटेशन में जो कुछ ऑरा क्रिएट किया था, जो एक इमेज क्रिएट की थी, वो खत्म। You cannot afford to do that. You cannot absolutely afford to do that. So this is the pre-presentation preparation which has to be done. Post presentation, अगर आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट किया है तो एक गलती कभी मत कीजिएगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद में जिसने आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कराया, चाहे वो एचआर से हो, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, उसके ऑफिस में जरूर मिलिए। मैं बॉम्बे गया था एक बार प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी महारत्ना कंपनी के ऑफिस में, तो वहां के जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन शेड्यूल करवाया था। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन किसी के थ्रू उन्होंने प्रेजेंटेशन शेड्यूल करवाया था। तो प्रेजेंटेशन के बाद मैं उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया, तो वो ऑफिस में थे नहीं। तो उनके ऑफिस में मैं चाहता तो एक सिंपल सा अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ करके आ सकता था, बट मैंने वैसा नहीं किया। मैंने उसकी सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आपके पास A4 शीट है, आप मुझे दीजिए। मेरे पास A4 शीट थी, लेकिन मैंने A4 शीट उनकी सेक्रेटरी से ली। उस A4 शीट पे मैंने उस जीएम के नाम पे एक लेटर हैंड रिटन लिखा, सर आई हैव बीन एट योर प्रीमाइसेस, इट हैज बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, this has been one of the best experiences so far in the last 51 workshops which I have done, and there has been a continuous engagement of more than 65 minutes with your people. Thank you very much for this arrangement. Regards, Rahul। ये हैंड रिटन नोट मैंने जब उस सेक्रेटरी को दिया, आज तक वो सेक्रेटरी मुझे नहीं भूली और ना वो आदमी मुझसे भूली। उस बंदे ने जब वो ऑफिस वापस ज्वाइन किया 2 या 3 दिन के बाद में, उसने मुझे वापस कॉल किया, आई गॉट योर हैंड रिटन नोट, डिड यू क्रिएट एन एक्सपीरियंस इन दैट प्रेजेंटेशन फॉर द पर्सन whom you have not met। उस प्रेजेंटेशन में एक बंदा नहीं था और उसके लिए भी आप एक इंप्रेशन छोड़ करके आए हो। Will he be able to forget you? No।
वो प्रेजेंटेशन मेरी हुई थी कुछ 2022 के एंड में या 2022 के सितंबर अक्टूबर में वो प्रेजेंटेशन हुई थी। लास्ट ट्रिपल एफ वर्कशॉप के बाद मुंबई जब मैं गया तब वो वर्कशॉप हुई थी। वो क्लाइंट आज इस महीने में रिटायर हो रहा है, जिससे मैं मिला नहीं था, जिसको मैं हैंड रिटन नोट दे करके आया था। आज 12-13 महीने के बाद में वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। ही इज रिटायरिंग एंड ही वांट्स टू डू बिजनेस विद मी। दिस इज हाउ यू क्रिएट एंड प्रेजेंट योरसेल्फ. Let me move forward. I think we are running short of time. I'll try to wrap it up in like next 10 minutes. That will be good if I wrap it up in next 10-15 minutes. Perfect, perfect. So now coming to some of the, now I have broadly tried to cover the most important elements in a presentation, जो हमें presentation के पहले करने चाहिए, presentation के बाद करनी चाहिए, presentation के शुरुआत में क्या करना है। देखिए ये in my personal understanding मेरा ये मानना है कि जब हमारा ये आज दोपहर में 4 बजे presentation शुरू हुआ तो उस समय कोई खाना खा रहा था, कोई ऑफिस में था, कोई क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, कोई ट्रैफिक में था, कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, सब अलग अलग इन्वायरमेंट में थे, करेक्ट। लेकिन प्रेजेंटेशन तो 4 बजे डॉट शुरू हो गई ना। प्रेजेंटेशन अगर मेरी 4 बजे डॉट शुरू हो गई तो जो आदमी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा करके आ रहा है प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, उसके बैक ऑफ द माइंड अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी के बैक ऑफ माइंड में अभी भी ट्रैफिक है, किसी को बैक ऑफ माइंड में अभी भी है कि यार मैंने गाड़ी लॉक की कि नहीं की, किसी के बैक ऑफ माइंड में अभी भी है कि यार बच्चे को मैं खाना खिला रहा था, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसको उसके दिमाग, कोई क्लाइंट से बात कर रहा था, तो वो बैक ऑफ द माइंड चीजें वहां रह जाती है। हमारे माइंड को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने में समय लगता है। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत पे मैंने एक एंथम प्ले किया। जनरली जब मैं प्रेजेंटेशन फिजिकली करना प्रेफर करता हूं तो मैं नेशनल एंथम प्ले करता हूं, और नेशनल एंथम के वो 2 मिनट जब नेशनल एंथम चल रहा है तब सब लोग अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ करके यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं। Those 2 minutes give you the rest of the 60 minutes with those people. अगर आपने वो ओपनिंग एक्टिविटी नहीं की, I learned this from Kanak because Kanak always does his presentation with an opening activity. ये opening activity give you the complete attention of your clients. In that presentation जो मैंने आपको introduction video दिखाया, that is what how I introduce myself. During the presentation, I have to keep a target of the audience कि मेरी audience की क्या requirement है. Let me give you one of the glimpse of another. This will be the last snapshot which I am sharing with you. To identify, every client can be categorized into 4 different categories. Every client categories can be every client can be defined into 4 different categories, और उन categories को identify करके जब आप उस client को answer करने की कोशिश करते हो तो देखिए कितना difference होता है. Let me show you that glimpse by Catherine Molly. She is an Australian speaker and उनका भी complete 1 hour का video यहाँ पे Beyond Classroom series में present है. Let us hear Catherine. To know Audible? what's important is audible? our clients also fit into here on how they're likely to buy. So the D people, they're going to tell you exactly what they want. Our I people are going to tell you everything and answer any questions you have. Our S people may not be quite certain yet of what they need, and our C people want all the facts. Now in the chat, I want you to let me know. I will repeat this because this is very, very important mental model. This is one of the most important mental model. अगर आज के 60 minutes में अगर आपके 1 minute की attentiveness है, I want your 1 minute of attentiveness on this video. For those who are still not attentive, please pay attention to this. After 10 seconds, I will play this video. There you go. What's important is our clients also fit into here on how they're likely to buy. So the D people, they're going to tell you exactly what they want. Our I people are going to tell you everything and answer any questions you have. Our S people may not be quite certain yet of what they need, and our C people want all the facts. Now in the chat, I want you to let me know who is the most easiest to sell to. Who is the most easiest to sell to?
Very good. Okay, excellent. Okay, so yes, your I people are generally the easiest because you can ask them any questions and they're going to answer because they like you and they want you to like them. Our D people, they'll go in knowing that they want something, but it will be up to you to be able to show them other things, and they'll say yes or no. The hardest one to sell to is who? Yeah, our S people, because they might need to go and ask their partner, they might want to talk it out. They generally won't get that straight away. Our C people will go in with their facts and figures, and if you can meet them, they will buy. So that's great that you can see that. I'm not going to go into this too much right now. You can take a picture of the screen, but our D customers, they want it now and they want to walk away with it. Our I people, they want it, but they want it to be fun while they're doing it, right? They want to like you as well. Our S people, they want assurance that this is right. Be more patient with them. It'll take a little bit longer, but they will stay with you. And then, of course, our C people, they want facts. So the crux of this mental model was every client can be categorized into 4 categories. There are D people who are very direct. Primarily the coming generation, the generation X, is very direct in their requirement. If you're going to target a new 25, 27, 28-year-old fellow and trying to give him a philosophical lecture, sir, aapka goal planning karenge, aise karenge, waise karenge, he is not going to listen to you. He already understands that probably, and he has a direct question. I want this, will you be able to give me this? He wants a direct answer. Then there are I people who are mostly very inquisitive, who want to interact with the advisor, who wants to answer a lot of questions, who also wants to ask a lot of questions. They will not love a direct communication. Then there are S people. Majority of investors, ज़्यादातर investors S category में होते हैं, जो actually confused होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या होता है. हम उनको जाकर के पिच करते हैं, आप ये ले लीजिए. अगले दिन वो बोलते हैं कि मैं अपने वाइफ से, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और तब तक उनका माइंड फ्रेम पूरा चेंज हो जाता है. एंड दैट इज वेयर वी लूज बिजनेस. सो अगर हम एक एस कैटेगरी के क्लाइंट से इमीडिएट बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर रॉन्ग. वी नीड टू गिव देम टाइम. इंस्टेड ऑफ कि वो क्लाइंट बोले कि आप रुक जाओ, इतना हड़बड़ी मत कीजिए चेक लेने की, आप मुझे समझने दीजिए, आप खुद बोलिए. अगर वो चेक क्लाइंट आपको चेक काट के दे रहा है पहले दिन, पहले मीटिंग में मत लीजिए उसका चेक. अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है, वो एस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आप उससे पहले दिन चेक मत लीजिए. देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो चेक बाउंस होगा. वो चेक अगर इन्वेस्ट हो गया तो रिडीम होके किसी और के पास जाएगा. और उसी क्लाइंट को अगर आपने वो चेक अपने हाथ से वापस दे दिया, मैम प्लीज हैव अ रीथॉट, प्लीज थिंक अगेन, व्हाट डू यू वांट. आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट पिक्चर, प्लीज डिस्कस विथ योर स्पाउस एंड देन कम बैक. 4 दिन बाद वो चेक वापस आएगा, आपके पास आएगा. दैट विल ब्रिंग यू द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर. दीज आर मेंटल मॉडल्स यू कैनॉट अवॉइड. इफ यू वांट टू ट्रैवल और ट्रैवर्स द जर्नी फ्रॉम 1x to 10x to 20x to 100x, you cannot make these mistakes. You cannot afford to make these mistakes at this juncture when we are standing at 40 lakh crores in the industry. At this juncture when we are staring at an industry size of 100 lakh crores in the next 4 to 5 years. At this juncture जब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले सालों में जो SIP की टिकट साइज है, जो SIP की ग्रोथ रेट है, दैट इज गोइंग टू एक्सप्लोड फ्रॉम 20% CAGR to maybe 30 or 35% CAGR. We cannot afford these mental models. You have to invest your time into this. You have got, I think all of you have got the subscription for annual or for lifetime for the FFF Beyond Classroom series. Please go through that. Please watch these. There is much more into this which I would actually want to share with you, but this is where I would give a pause to you, give a pause to this workshop, to this session. Thank you very much. I hope you have liked this session. There is still many more things to be discussed, to be explored, but I think that you will have to take on your own. Thank you very much. Over to you, Kanak.
Yeah, boom, boom. Yes, friends, as usual, an amazing session by Rahul, and much deserved from all of us, no doubt in it. So that's really awesome. As usual, you've added a lot of value, and I think we all are really, even I am also now willing to go through all these videos again and see how I can just recap and do a little more, whatever it is. Yes, friends, these Beyond Classroom, all seasons are really good, and maybe after a year or so, this particular video which Rahul has presented today will also be of lot of help, wherein we will be taking reference for this, and in the coming workshops also, which is going to be season 15, wherein we all are again preparing certain strategies. So thank you so much, Alok and Rahul, and it is really nice. Any questions to Rahul? Short questions and short answers. If it is, we can do it for 2-3 minutes, and then we are done. I think all of us are there, and we all are really enjoying this session, especially the preparatory part, which he mentioned in the group, to be ready with these things, and the way he started, and the way he has dressed up, and the way he has actually given the whole look to the camera so that everything is quite visible, and the way actually he took out his tripod and all the other things, the markers and all, and the way we can see all whatever is there at his backside. So everything is very important, friends. Even I have learned something, and I will try to implement it to some extent, if not in office, maybe at home. So, so that's really nice. Thank you so much, Rahul. And we all can just add if we have learned something or something which you will take away today and you will implement it from tomorrow or from the next meeting. Please do write it, or please unmute yourself and speak. Yeah, this is Chetan here. Yeah. Can I? Yeah, Chetan, please go on. It would be lovely to hear you. Hello everyone. High five. Rahul bhai, it was a Fado presentation. I'm really impressed with the way you have presented this, and I think the takeaway for me would be, the line which you said, that the presentation starts when you enter in the room, not the time when you're fitting the wire, setting up the presentation, screen was up. That's where, a lot of people will get distracted. They start. I have experienced this in one of the company where I was presenting, and there was a technical issue. I was addressing the technical issue, and the members who were sitting, all the employees, they started discussing among themselves. So, pura distraction ho gaya. Rather than we can use someone to do it, and we can keep interacting, और जब तक वो ठीक ना हो तब तक हम लोग दूसरी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्राउड को अपनी तरफ attention रख सके. So that was a very good thing which I've learned, and there are many more things. I think the couple of video also had a very good impact. I think you should share this video in the group. I will I would like to go through this video completely, and it was a really very nicely done. All the best, Rahulji. I mean, what superly presented. Thank you so much. Thank you. High five, Chetan. Thanks very much. I had to actually crisp it down to 1 hour. This was one of the shortest session which I have obliged. One hack I would like to share with all of you. I would like to share all of you with one hack how I actually got into this Beyond Classroom series completely. And believe me, there are more than hundreds of videos on the Beyond Classroom dashboard. There are more than hundreds of videos. And all of these videos have been conducted by experts from all across the world. I don't know how Kanak has got connect with these many people on one forum, but how do you get to watch all of these videos? I'm going to give you one small hack. Every day, you have to watch one video as a religious pattern. So I start my day at 5:30 in the morning. My calls to my clients start at around 10:30 in the morning. I'm done by the newspapers by around 8:30 to 9 in the morning. So between 9 to 10 is the time religiously I will have to watch one YouTube video. चाहे दुनिया को मैं बेवकूफ लगूं जो सुबह 10 बजे YouTube खोल के देख रहा है, बट मैं बेवकूफ हूं. अगर मैं बियॉन्ड क्लासरूम के सेशंस को 2x की स्पीड पे YouTube पे नहीं देखूंगा
तो मैं ये कभी भी नहीं समझ पाता जो 2 साल पुराना है इंडस्ट्री में. I have been into this industry since last 2 years only. I joined this industry in February 2021 post COVID. Before that I was into the same industry, but I was into an institutional advisory services. But यहाँ पे Beyond Classroom series में there are videos by Raj Lakhotia, there are videos by CA, I am forgetting his name, but उनके videos में I got the complete inspiration कि as a financial advisor, my client is not looking for mutual fund from me. He is looking for will planning. He is looking for estate planning. He is looking for tax advisory services. He is looking for capital gain statements. A whole host of things he is looking at from me. I may not provide him all of those things, but today I am connected to all of those people who are part of the Beyond Classroom fraternity to offer my client one of the best service fraternity in India. Thank you very much, Kanak. Well said. Phenomenal, super energetic, and as usual, even though we were making one presentation, even Chetan was there in Bangalore on this Sunday, and we wanted to present the asset allocation game. Somehow it did not work. Then Chetan and myself, we both thought that we should directly play it on the website, and we conducted it in front of 350 people. We plan certain times, no, things don't work as you wish to, but 300 people don't know that. You will have to get the whole thing done. So again, Chetan and even Arpan was there, and we just did it. So I think there is Purushottam. You have some question? Paritosh. Paritosh, sorry. Yeah, Paritosh. Hi, Rahul. Yeah, I have bad network issues right now, so my I like your video mustache. might not... I'll consult you. Yes. So that's the question I had basically. So I'm a second generation mutual fund distributor. My father started this around 2 decades ago. So now when I am meeting the older clients, they get a complex when they see my look, because obviously it's not the look you generally associate with a mutual fund distributor or financial consultant. So how do you go about that? Because you have a similar mustache, and yeah, I've. Oh, wow. So that brings in that I should be charging you a consultancy fee instead of offering a free advice at this juncture. Your question is very specific, very specific. Okay, so let me tell you that most of my clients are in the age bracket of like 55 to 75. Audible? Okay. So when most of them, and while I'm managing 150 plus crores of assets, my SIP book is not very decent, because most of these clients have lump sum money, they are retiring, and they want to park this money to get an SWP instead of an SIP. Let me tell you, I have a big SWP book than an SIP book. Right. My client, when he is talking to me, and fortunately, it's fortunate that I'm talking to people who are elderly, who have seen the better part of world behind them. At this juncture, when you're talking to a client who is elderly, who is beyond 40 years of age, the first hurdle of trying to convince the client to save money is already done. Your 90% of the battle is already done. Now, the only question before that client is to put up the trust and respect with you. And that trust and that respect will only come with time. As I told you in one of the examples, I went to Bombay for a conference. In that conference, there was one person who was the organizer, who was also the general manager. He was not present, but I left him a handwritten note. Right. And he did not connected to me after that one phone call which he gave me. In a PSU, if you are a Maharatna, that means you are not less than a big shot. Got it. If that person calls you after a handwritten note, that's good enough. That's good enough to understand that he have registered your mobile number. He will connect you only when he has the appetite to invest money. Financial advisors and doctors are not required every night. They are required only when there is a need for money. My objective is to block a space in his mind where Rahul Chandalia's name fits in over there. Whenever he has a requirement, he is retiring today, this month, almost 11 months after that workshop,
and the first name which he thinks is you. Got it. I was working with one of the another defense companies, and that was pretty old, like in 2014, 2015. I went to Lucknow, visited their offices. That was a defense sector PSU. 2015, I met this fellow. This fellow was again an assistant manager at that unit. Post-COVID, I visited another unit of the same company in Kanpur. To my surprise, this fellow whom I had met in Lucknow was the person in charge of the entire Kanpur aircraft division. Okay. You cannot imagine what kind of business he has given me personally, as well as into the organization. But he could remember my name. What I did was, in that meeting in 2014, I took his portfolio, put up that portfolio into my system. I kept sending him one report every quarter. It took a few minutes of my time, but that report to him was personalized. Okay. So patience is the only key, my dear friend Paritosh. You are from Delhi? I'm from Goa. Oh, perfect. So yeah, You're welcome to Delhi. Okay. Next time I come, I'll definitely contact you. That's all. Okay. I hope Paritosh, there are no I'm more coming questions. to Paritosh. Hello. Yes. Yes. Having some session at Goa. So I Okay. will, please do attend. Yeah, we'll connect then. Yes. Thank you. No more questions. I think we are done with the session. Thank With you very this, much. We are done. Thank you so much, Rahul. Thank you so much, everyone. I think the excitement will continue. The last session is on this Thursday for season 14. And then we will start season 15, which is on strategies. And Chetan is one of the speakers there. And we will have quite a number of our volatility coaches who are preparing good. And I'm sure we will all have a good time learning from each other. So thank you again. Thank you from Suraj also. Thank you from Chetan. Thank you from each and everyone from the very core of our heart to the well-dressed gentleman, Rahul Chandalia. Thank you. Thank you very much. See you off. Bye bye. Take care. Have a very good week ahead.